Hi friends, welcome to my channel Ruchi's World. How are you all doing? I hope you're doing great and I hope you're watching my videos and liking them. So today's my video is all about a natural DIY hair mask which I often use on my hair. नॉर्मली संडे इज़ द वन जिसमें मैं DIY करती रहती हूँ. बहुत सारे हेयर मास्क मैंने ट्राई किए हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज की जो मैं फ्रीक्वेंटली अप्लाई करती हूँ. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस हेयर मास्क विथ यू. सो इस हेयर मास्क का मेन इंग्रेडिएंट है बनाना. सो बनाना एज यू नो इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशंस और ये आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए और ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी. बनाना कंटेन्स सिलिका मिनरल एलिमेंट विच हेल्प्स your body to synthesize collagen and it helps your hair to make to become stronger and thicker. Then it also has antimicrobial properties जिससे कि आपके अगर हेयर फ्लीकी हैं या ड्राई हैं या इनफैक्ट डैंड्रफ है सो वो भी बनाना हेयर मास्क से दूर. इट मेक्स योर हेयर सिल्की, स्मूथ, सॉफ्ट एंड वॉल्यूमिनस. सो ये आपको हफ्ते में एक बार या महीने में 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको ये लगाना चाहिए. जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड इट विल गिव यू रियली गुड रिजल्ट्स. बनाना आपका जो है एकदम रॉ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रैपन भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी द नॉर्मल बनाना विच यू रेगुलरली ईट. वैसा ही होना चाहिए सो दैट इट विल गिव यू दोज हेल्दी बेनिफिट्स फॉर योर हेयर. हैव टू कीप दिस हेयर मास्क फॉर एटलीस्ट 1.5 to 2 hours जिससे कि आपके हेयर में वो अच्छे से आपकी रूट्स तक वो अच्छे से चला जाए. एंड यू हैव टू अप्लाई इट वेरी नाइसली एंड कीप इट फॉर दैट लॉन्ग एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. इफ़ योर बनाना जो है अच्छे से मैश नहीं हुआ है, प्रॉपरली ग्राइंड नहीं हुआ है तो उसके जो छोटे छोटे दाने हैं वो आपके हेयर में रह जाते हैं विच इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट आफ्टर वॉश इज़ वेल. सो जस्ट कीप इन माइंड दैट आपका जो हेयर मास्क है वो एकदम वाटरी जैसा होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी हार्ड और उसमें बिल्कुल भी छोटे उसके दाने या छोटा बनाना नहीं रहना चाहिए. सो आई विल शो यू हाउ आई हैव मेड इट सो यू कैन जस्ट ट्राई दैट. लेट्स गो.
फ्रेंड्स, दिस इज़ द रिज़ल्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ही हेयर वॉश किए हैं और नेचुरल सनलाइट में ड्राई किए हैं एंड माई हेयर फील्स वेरी सॉफ्ट, स्मूथ और थोड़ा सा शाइन आया। आई विल शो यू इन द सनलाइट एंड यस, इट्स फीलिंग ग्रेट। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर वॉशिंग। इतना सॉफ्ट, इतना सिल्की सा फील हो रहा है कि आई एम नॉट stopping this. So I hope you like this video. I hope you're going to try this at your home and do let me know your feedback, your comments and how it went through on your hair. आपको results कैसे मिले? And yes, do keep liking, sharing and subscribing to my videos and take care. Love you all. Bye bye.